Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for class 7 English text and this is lecture number 25. My dear students, yesterday we did exercise 1 and exercise 2 of language practice. And today we will do exercise number 3 on page number 36. So kindly take out your books and open page number 36 for exercise number 3. Exercise 3 on page number 36. Complete the following sentences using the suitable adjective noun pair along with the article if any from exercise 2. Do the exercise in your notebook. After you have done it, compare your answer with your partner. Beta, exercise 2 में we used some adjective noun pair. ठीक है, तो जैसे हमने यूज़ किया था an oval kite, black eyes, an early hour, tasty food, an injured finger, a sweet apple, fast vans, 20 tables, dirty water, an untidy room, creamy milk, an unripe orange. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव नाउन पेयर हमें यूज़ करने हैं टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. ऑलराइट, लाइक Mansoor bought dash for the kite flying competition. मंसूर क्या खरीद के लाया काइट फ्लाइंग कंपटीशन के लिए? वेरी गुड. An oval kite. Next, my mother made pudding with dash. मेरी अम्मी ने पुडिंग बनाई. पुडिंग किससे बनाई? वेरी गुड. Creamy milk. Okay, here you don't need to be worried about the answers. I will show the answers in the end. ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ इसको डिस्कस करें, आंसर्स को फिक्र ना करें, डिस्कस करें, मैं एंड में आपको आंसर्स दिखा दूंगा. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द कुक मेड डैश फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग. मेरी बहन की शादी में कुक ने बहुत अच्छा बनाया. क्या अच्छा बनाया? कुक मेड टेस्टी फूड, बहुत अच्छा खाना बनाया. प्लीज़ डोंट बाय, प्लीज़ कभी ना खरीदना. क्या नहीं खरीदना? अनराइप ऑरेंज. प्लीज़ डोंट बाय एन अनराइप ऑरेंज. नेक्स्ट, द क्लीनर मैनेज टू डू ऑल हिज वर्क विथ डैश. क्लीनर अपना तमाम काम करने में कामयाब रहा. किस चीज़ के साथ? विथ एन इंजर्ड फिंगर, जख्मी उंगली के साथ उसने तमाम काम किए. Drinking dash can make us fall ill. क्या पीने से हमारी सेहत खराब हो सकती है? हम बीमार पड़ सकते हैं. गंदा पानी. Drinking dirty water can make us fall ill. Number 7, get up at dash and you will be able to complete all your work. गेट अप एट एन अर्ली आवर. 1 घंटा पहले उठ जाओ तो आप दिन का तमाम काम कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट, द बेबी हैज़ ब्राउन हेयर एंड डैश. बच्चे के भूरे बाल हैं और काली आंखें हैं. ब्लैक आइज. द बेबी हैज़ ब्राउन हेयर एंड ब्लैक आइज. नेक्स्ट, पुट डैश हेयर वन बिहाइंड द अदर. यहाँ ये लगा दो एक के बाद एक. क्या चीज़? 20 टेबल्स. पुट 20 टेबल्स हेयर. यहाँ 20 टेबल्स लगाएं. वन बिहाइंड द अदर, एक के पीछे एक. नेक्स्ट, द पीपल वर अफ्रेड बिकॉज द डैश वर रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर. लोग घबरा गए, परेशान थे क्योंकि रेस लगा रहे थे एक दूसरे के साथ. कौन? फास्ट वैन्स वर रेसिंग. The people were afraid because the fast vans were racing against each other.
नेक्स्ट, आई लाइक ईटिंग डैश एवरी डे, मुझे रोज़ाना खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या चीज़? अ स्वीट एप्पल, एक अच्छा मीठा सेब रोज़ खाना अच्छा लगता है। हिज फादर टोल्ड हिम टू क्लीन अप हिज, इसके फादर ने कहा तुम सफाई करो। किस चीज़ की? किस जगह की? अनटाइडी रूम। हिज फादर टोल्ड हिम टू क्लीन अप हिज अनटाइडी रूम। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड फॉर द आंसर्स। Answers of exercise number 3. Number 1, an oval kite. An oval kite. Number 2, creamy milk. Creamy milk. Number 3, tasty food. Tasty food. Number 4, an unripe orange. An unripe orange. Number 5, an injured finger. An injured finger. Number 6, dirty water. Dirty water. Number 7, an early hour. An early hour. Number 8, black eyes. Black eyes. Number 9, 20 tables. 20 tables. Number 10, fast vans. Fast vans. Number 11, a sweet apple. A sweet apple. And number 12 is untidy room. Untidy room. Okay, now take out your diaries for homework. Your homework is do exercise 1, 2 and 3 of language practice into the notebook. Okay? That's all for today. We will meet inshallah in the next class. Till then, take very good care of yourself and your family. Assalamu alaikum.